तो सोशल वर्क हेरल्ड में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारा जो एक सेगमेंट है इन कन्वर्सेशन विद, आज इन कन्वर्सेशन विद में हमारे साथ हैं मोहम्मद फराज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली समाजकार विश्वविद्यालय में एमए समाजकार के विद्यार्थी हैं और वो तमाम सोशल वर्क के तमाम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आज वो सवाल पूछना चाहते हैं जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में रहते हैं। सो फ्रेंड, वेलकम टू सोशल वर्क हेरल्ड। टुडे वी इन आवर सेगमेंट इन कन्वर्सेशन विद, we are happy to have a representative of thousands of students of social work, Mr. Faraz. Mr. Faraz is a student of MA Social Work in Delhi School of Social Work, and on your behalf he will be asking those questions which normally often comes to your mind. So welcome Faraz. You are free to ask the question. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity to come on your channel Social Work Herald. तो दोस्तों, मैं आपके बिहाफ पर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। cheer me up. So सर, पहला सवाल आपके लिए just like it's like a one-to-one question. तो पहला सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या सर कोई डिफरेंस है सोशल वर्क और सोशल सर्विस में? एक्चुअली स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं एथिकल डायलेमा कि क्यों करें ऐसा कोर्स जो कि हम वैसे भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प करना, सोशल सर्विस करना, व्हाई डू वी नीड अ डिग्री फॉर दैट? तो ये एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है सर। तो सर प्लीज। This is a very normal question and this is a very normal query in the mind of students, especially those who join social work, because by virtue of its name, social work, we believe that helping people, working something for the society, working in the community is social work. That's true. But it is more a social service, and social work as a subject, as a discipline, teach you how to help the people. You know, this question of how makes you perfect in the skilling. It gives you an idea that it is not that anyone can help anyone, but people, those who are in distress, they need specialists, they need people, those who have a knowledge how to help. So help is also not the same as understood by anyone. Professional social work is an art as well as in a science. So it is a question, respond why to help the people and how to help the people. And this is what we try to train you in different fields, that how to help children, how to help community, and also the reasoning, why to help the community. Is it simply because of our charitable mind or very philanthropic attitude, or it is because that this is a matter of right to the people that they should be helped. So it is a broad perspective which starts from the individual social service or individual help to a more trained, qualified way of helping people. So these are two different. I understand that yes, services can be provided by anyone, but the expert, qualified, trained people can help the people in a better way and in a most desired way. Which is the best institute for pursuing degree in social work, sir? देखो, there is nothing like best institute, to my mind. Of course, we have 500 plus schools of social work, then 14, distance mode of learning universities, then one national, Indira Gandhi National Open University. We have a wide network of teaching and training social work people in this country. And as per report of All India Survey on Higher Education, almost more than 1 lakh students are getting enrollment in the field of social work. 60,000 in BSW and 50,000 plus in masters in social work. You can check the exact figure with All India Survey on Higher Education report on the website. So there are
number of students and across the country. Almost all states have the schools of social work or department of social work. The question best, maybe in terms of resources, maybe in terms of staff, or maybe in terms of the teaching pedagogies. So there are, in most of the state, you will find there are social work schools in central universities, in state universities with a qualified teachers. And if you go into the ranking pattern, then obviously the first school of social work, Tata Institute of Social Work, which is called TIS now, Tata Institute of Social Science, comes first, followed by Delhi School, then Rajgiri School, and there is a list. And India Today and The Week, there are some magazines which they do the ranking. You can check that ranking also. You can check the ranking on the NAPSB website also. So if you are interested to go, you can go that way also. And now all the central universities which have social work, there is a combined test. So I believe that it depends where you want to study. But of course, these 7-8 school, Baroda School, Rajgiri School of Social Work, Madras School of Social Work, Delhi School, Jamia Millia Islamia, Nirmala Niketan, Mangalore School of Social Work. There are some schools of social work which are established more than 50 years ago. So they are definitely best. Some new schools are coming up. Of course, they do not have that much big library or staff, or they are establishing themselves. So you can choose according to your convenience, where you want to go and what you want to study. You can always visit their websites. लगातार सीट्स बढ़ती जा रही हैं, मुझे लगता है कि इसका बहुत सारा पार्ट आपने पिछले क्वेश्चन में कवर कर लिया है. तो आपका क्या व्यू है सोशल वर्क को लेकर के कि कैसे नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं पिछले 2 डेकेड्स में? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स इसलिए इंक्रीज हो रही हैं, मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, वो तभी इंक्रीज होती हैं जब उसकी डिमांड होती है. तो सोशल वर्क की डिमांड पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है. And this demand has come in many different fields. There are new branches of social work which has emerged, like green social work, criminal justice social work. Even now we are talking of transnational social work, international social work, occupational social work. There are a number of branches which has come, disaster management. So as the area is increasing, the social work is spreading into its wings. The number of students are coming, more and more students are coming. I recall that by 1975, there were hardly 30 or 35 institutions which were imparting MSW degree. And interestingly, there were very lesser number of colleges or universities which have a graduate classes, BSW program. But now there are more than 200 institutions which are providing BSW program also. So the seats are increasing, and still this is a course which provides large number of employment. And therefore, if seats are increasing, that means demand is increasing. Right. And there is a very lesser unemployment ratio you will find in the social work graduate. Most of them are working. Yes, some of the social work graduates are working on very lower pay or lower scale, and their wages are not that good as it should be. But this is one subject in social sciences where most of the students do get job. Right? Right, sir. तो सर इतना अच्छा कोर्स है ये, तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं है, कि ये कोर्स इतना छुपा हुआ है, इतना हिडन कोर्स है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए जब बात आती है मेडिकल्स की और या फिर इंजीनियरिंग की या फिर अलग अलग जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं. तो सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल वर्क अभी यंगेस्ट डिसिप्लिन है, यंगेस्ट प्रोफेशन है सोशल साइंसेज में. इन कंपेरिजन टू अदर प्रोफेशन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ,
pharmacy, they have been very much established. But the social work is one of the youngest discipline. And second is that we have borrowed this concept from the Western society. So it took time to get itself Indianized. Now if you will see post-globalization, after 1992, and especially in last 2 decades, 2001 onward, there is a number of schools came up. Even this demand for having social work in Open University, that also came in 2005. So this School of Social Work, Indira Gandhi National Open University came in 2005. Now, after the COVID, there is a demand on online courses. So now, online courses are coming up in the social work. That's mean as the society demands, the courses do get their preferences. In comparison to medical sciences or engineering sciences, I believe that in social science, behavioral science, we are doing very well and we are the youngest. Therefore, it will take time to get attention of people. Second biggest reason is our name. When you say social work as a profession, people find time to digest it. That can social work be a profession? Because people have the notion in their mind that social work can be done by anyone, right? So it will take time that even social issues required specialized attention. राइट सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन फेस करते हैं सर हम लोग. Because this we have to tell the people that providing help, providing support, giving, helping hand also required knowledge. Because how to help is a big question. And we have to help the people without compromising their dignity. They should not feel offended that they are being helped in the way which they do not like. So that this course is little more difficult in the sense because we work with the people. We work with the behavior of people. We work with the expectation, aspiration of people. That is why this course will take time to get its roots installed. So I think that the growth of social work is very good in comparison to other professional courses. And now 1/5 universities of India, they are offering social work. 20%. That's a huge number. सर जैसा आपने कहा कि एक इमर्जिंग प्रोफेशन है और मुझे लगता है कि ह्यूमन रिलेशंस, जैसा आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हम डील करते हैं वो सीधा ह्यूमन माइंड से कर रहे होते हैं हम डील. तो सर मेरा इस पर सवाल ये आ रहा है मुझे कि ये स्टूडेंट्स का भी रहा है क्वेश्चन कि हम ऐसा क्या पढ़ते हैं सोशल वर्क प्रोफेशन में और हम हर जगह पे चले जाते हैं ऑलमोस्ट. हम साइकोलॉजी की भी तरफ जाते हैं, हम सोशोलॉजी की भी तरफ जाते हैं. तो कैसा इस कोर्स का डिज़ाइन है कि जिससे कि बच्चे सोशल वर्क के प्रोफेशन में अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं? Look, the core of profession of social work is human relation, मानवीय संबंध. And to understand the relationship, to understand the way of working with people, to understand how to work with the people, to understand why to work with the people, we need the knowledge of different discipline. That is why in social work, this is a very interdisciplinary subject. We draw the best from sociology. We also draw from the psychology. We take the help of economics in understanding the economic issues or developmental issues. We take the help of law. We try to understand the constitution. We try to see the family. We try to see the women, gender. So if you will see, social work is a subject which has drawn the knowledge from different social sciences and also from the wisdom, traditional resources, our indigenous knowledge. And the whole idea of working with people requires the
multifarious knowledge. That is why in social work we have different kind of subjects and different kind of discipline, because it is much more behavioral in character. We have to understand the issues in with the different dimensions. So a student is being prepared with knowledge bank which is drawn from social sciences, which is drawn from social work itself, which is drawn from the indigenous knowledge, which is drawn from the day-to-day practices, how the people, because our concern is the well-being of the people. Second, that our issues are working for social justice and human rights. So when we work with the marginalized system, marginalized people of the society, or when we work for the human rights, the knowledge of political science, the knowledge of public administration is also required. So that is why we have a multi-dimensional interdisciplinary approach to understand the issues and problems of people. And this is the only subject in, whole higher education system where a student is being given knowledge from so many disciplines, and that too in a possibly applicable format, that how that knowledge can be applied. So it is not only theoretical roting or mugging up of the knowledge, but how that theoretical knowledge can be translated into the practice. That is why we say social work is an academic discipline and a profession which works for the well-being of the people. That is why we require, and that is why you will find that most of the students make complaint about the books, that they don't have books. So I normally suggest the students that they should go to the basic books of different discipline for what they understand. Like NCRTs. They can have the NCRT, the basic book of sociology, the basic book of economics, even the Constitution of India. Rather, I always recommend to the student of social work that they must read the Constitution of India. Once they will read the Constitution of India, they will be able to understand that social work is a democratic subject. How the democratic values operates in the social work profession. How the human rights issues are so close and dear to our professional practice. That is why it is very important, and that is why we have a multiple knowledge from multiple disciplines. सर प्रोफेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, और इमर्जिंग भी है, डिमांड भी बढ़ रही है. तो सर ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि मास्टर्स डिग्री के बाद बच्चे अगर प्रोफेशन में इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, तो किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं हमें? देखिए, इसको मैं एक बहुत सिंपल से फार्मूले से कहूँगा कि जहाँ जहाँ मानवीय संबंध आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ जहाँ मानवीय समस्याएं नज़र आती हैं, वहीं पर सोशल वर्क का स्पेस और स्कोप है. विद्यालयों में स्कूल सोशल वर्क है, फैक्ट्री और कॉलेजेस में इंडस्ट्रियल सोशल वर्क या ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क है, फैमिली में फैमिली एंड चाइल्ड सोशल वर्क है, विमेन के साथ विमेन सोशल वर्क है. तो सोशल वर्क की बहुत सारी विधाएं सभी क्षेत्रों में ऑपरेट करती हैं, और सभी जगह चूंकि सोशल वर्क वेलफेयर से लेके राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव तक जाता है, तो मुझे लगता है कि वेलफेयर प्रोग्राम से लेके राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव के जितने प्रोग्राम हैं किसी भी फील्ड में, वो सब सोशल वर्क के दायरे में आते हैं. और वहाँ पे जो जॉब उपलब्ध हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध हैं, वो सब आपके लिए हैं. तो इसलिए ट्राइबल वेलफेयर में भी जॉब्स हैं, लेबर वेलफेयर में भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी हैं, विमेन वेलफेयर में भी हैं. आप देखेंगे कि बहुत सारी विधाओं में, मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा था, लगभग 18 मिनिस्ट्री में सोशल वर्क के लोगों को नौकरियां मिलती हैं. तो ये तो हो गया नौकरियों का संग्रह. लेकिन इसके अलावा सोशल वर्क प्रैक्टिस ओरिएंटेड है. आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आप बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद कंसल्टेंट के फॉर्मेट में, एक्सपर्ट के फॉर्मेट में, काउंसलर्स के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं. फिर एक अलग फील्ड है रिसर्च, टीचिंग, उसमें भी सोशल वर्क के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं.
अभी धीरे धीरे जैसे नई शिक्षा नीति में विद्यालयों के स्तर पर एक विद्यालय संकुल बनाने की बात हुई है, स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो उस स्कूल कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए जिस व्यक्ति की कल्पना की गई है, उसमें नई शिक्षा नीति में लिखा है ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड सोशल वर्कर। तो वो ट्रेन्ड और क्वालिफाइड सोशल वर्कर मैं समझता हूँ कहाँ से आएगा, इन्हीं विद्यालयों से निकले हुए लोगों को। अगर ऐसा होता है तो लगभग 1.5 लाख नौकरियां केवल स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे, प्राइमरी स्कूल के लेवल पे, जहां स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहां पे उपलब्ध होंगे। तो एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ के फील्ड में, मेंटल हेल्थ एक्ट में लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ के लिए सोशल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क में सोशल वर्क के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो नया इमर्जिंग फील्ड है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम को चलाने में, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के इशूज को देखने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी कम्युनिटी लेवल पे, दोनों स्तर पे सोशल वर्क के लोगों की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर हम एम्प्लॉयमेंट मार्केट के लिहाज से देखें तो सोशल वर्क को कोई दिक्कत नहीं आने वाली 20 सालों तक। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, बशर्ते कि हम बढ़ती हुई ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग और अपने एजुकेशन को चेंज कर लें। तो सर प्राइवेट प्रैक्टिस आपने बता दी है, और सर एक इमर्जिंग चीज़ इसमें दिखाई दे रही है वो ESG जो अभी आपने बताया। तो सर उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट्स इसको कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, CSR का जो फील्ड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फील्ड है, वो अभी देश में ज़्यादा नया नहीं है। कानूनी तौर पे 10 साल हुए हैं, बहुत सारे नियम, कानून, प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस अभी इस्टेब्लिश हो रही हैं और उनके दौरान ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि उन प्रोग्रामों को लागू करने के लिए जो क्षेत्र है वो सोशल वर्क का ही क्षेत्र है, सोशल सेक्टर ही है, जहाँ पे इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्यक्रमों को लागू किया जाना है। इवन शेड्यूल 7 में जो कार्यक्रम दिए हैं वो सब कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो वो सोशल वर्क के ही कार्य क्षेत्र के कार्यक्रम हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सोशल वर्क के लोगों को कम्युनिटी इंटरवेंशन से लेके इंडिविजुअल इंटरवेंशन तक के तमाम सारे कार्यक्रमों में ज़्यादा नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। अभी जो हम ग्रीन सोशल वर्क की बात कर रहे हैं उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इशू जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व में और इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ग्रीन सोशल वर्क की जो विधा है वो CSR के साथ कंबाइन करेगी और उसमें तमाम सारी नई रिसर्चेज ESG को लेके, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेके ज़रूरत पड़ेगी। तो सर हम इतनी थियरी पढ़ते हैं सोशल वर्क में अलग अलग तरीके की, कहीं हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सर इसका हम कहाँ फील्ड वर्क में अपने या प्रैक्टिस में कैसे लेकर आ सकते हैं? थोड़ा सर ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं रिपोर्ट्स लिखते में, तो इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ट्रेनिंग सोशल वर्कर्स इज ए डिफिकल्ट टास्क। वो इसलिए डिफिकल्ट है कि ये सारी शिक्षा का जो पेडागॉगी है ना, सोशल वर्क की जो पेडागॉगी है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में डिफरेंट है और जो विद्यार्थी आते हैं BA लेवल से वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न में आते हैं। तो उनको नए पैटर्न में ढालना, उनके लिए नए नए तरीके के मॉडल विकसित करना, उनको उसमें समझाना एक बड़ा काम है। इसलिए दिक्कत आती है, थोड़ा सा स्टूडेंट को लगता है कि अब इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है, सोशियोलॉजी का क्या रोल है, लेकिन हमारा जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना वो ह्यूमन रिलेशन का है। तो मानवीय संबंधों को समझना, मानवीय ज़रूरतों को समझना, मानवीय अधिकारों को समझना, मानवीय डिग्निटी को समझना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे ही हम सोशल वर्क की वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और उनको जैसे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो अपने आप में एक घनघोर आनंद का विषय होता है। आप विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा। मैं पिछले 40-48 सालों से विद्यार्थी हूँ, मैं हर रोज़ महसूस करता हूँ। अभी इस प्रोफेशन में कुछ दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें कुछ हमारे नाम की वजह से हैं, क्योंकि हमारा नाम सोशल वर्क बहुत कॉमन है और बहुत सारी जगह पे स्ट्राइक करता है।
हमारे तमाम सारे राजनेताओं को भी लगता है कि वो भी सोशल वर्कर हैं। तो हम उस अंतर को अगर स्पष्ट कर सकें लोगों पे, ये हमारी एक ज़रूरत है। यानी समाज कार्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना और अपने काम के माध्यम से अपने आप को इस्टेब्लिश करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरा जो किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो राजकीय जो स्टेट है वो स्टेट सैंक्शन मिले। तो अभी इस प्रोफेशन को इसलिए स्टेट सैंक्शन एग्जैक्टली नहीं मिली है, एक गो में नहीं मिली है। उसके लिए कार्य चल रहा है कि काउंसिल बनाई जाए और काउंसिल के माध्यम से सोशल वर्क की जो एजुकेशन है उसको गवर्न किया जाए, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। तो वो बात चल रही है। लेकिन तमाम सारे जो लॉ आए हैं पिछले 20 सालों में, फैमिली कोर्ट एक्ट से लेके मेंटल हेल्थ एक्ट और अभी जो नेशनल कमीशन ऑन एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, उनमें जगह जगह पे सोशल वर्कर्स की बात की गई है। उसमें जे एक्ट भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार और कानून दोनों इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि सोशल वर्कर्स की हमें ज़रूरत है। और सोशल वर्कर्स केवल नहीं, ट्रेन्ड और क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है जो उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें जो व्यवहार के साथ जुड़ी हैं, जो मानवीय संबंधों के साथ जुड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन अभी जैसे हमारी प्रगति 20 साल में हुई है पिछले, मुझे उम्मीद है कि अगले 20 सालों में परिदृश्य बहुत बदल जाएगा और सोशल वर्क अपने आप को एक फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन के रूप में इस कंट्री में भी इस्टेब्लिश करेगा। जैसे बाकी दुनिया के 125 कंट्रीज़ में सोशल वर्क पढ़ाया जाता है और वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी उसकी वही जगह होगी। वंडरफुल सर। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू।